Hi guys, welcome back to my channel. So a lot of people in India actually go and buy kittens, and no matter how much we advocate ki don't buy, adopt, certain sections of Indian people actually prefer buying breed kittens rather than adopting. Obviously they have their own thought and mentality, but by buying kittens or buying pets, we're actually giving them or encouraging illegal backyard breeders who actually get encouraged by this market. So in today's video, let me educate you about how you can buy a kitten in India, and what is ethical breeding, and how you can choose your breeder carefully and consciously. At the same time, why it is better to adopt than to buy a kitten in India. So let's get started. So statistical data says around 60 to 65% of Indian living in metro cities go for buying a breed kittens like a Persian kitten or any other breed, Siamese, rather than adopting a streetie. People have their own basis of logic कि वो किस लिए खरीद रहे हैं. Some people want breed, some people think that certain breed shows certain temperament, which is partially true. Certain breeds only show certain temperaments only if they're selectively bred. So let me tell you about the steps that you can do or you can follow in order to actually be a responsible buyer, at the same time prevent and discourage illegal backyard breeding. So the first step would be do your research very thoroughly. रिसर्च बहुत ज़रूरी है. आपको पेट अगर लेना है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप किसी को भी सरप्राइज गिफ्ट्स ना दें. इट लुक्स रियली रोमांटिक एंड इट लुक्स रियली लाइक ओ माई गॉड, आपको वो फील आ सकता है, बट इट इज़ नेवर एनकरेज्ड टू गिफ्ट अ पेट टू समवन बिकॉज पेट इज़ अ लाइफ एंड इट शुड बी ट्रीटेड रिस्पॉन्सिबली. एंड ऑब्वियसली इफ़ यू आर डूइंग योर रिसर्च, यू नीड टू नो कि वेदर अ पेट वुड फिट इन योर हाउस होल्ड फर्स्ट. आपका घर कैसा है, अपार्टमेंट है, घर है. आपका अगर अपार्टमेंट है तो डू यू हैव द प्रॉपर हाउस प्रूफिंग डन इन ऑर्डर टू गेट अ कैट, बिकॉज कैट्स कैन रियली बी स्किटिश एंड एस्केप सून. दूसरा स्टेप ये है, आपके रिसर्च में ये बिल्कुल इन्वॉल्व होना चाहिए कि आप जब कैट ले रहे हो तो कैट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी. What were the first things that you need to get before getting a cat? What are the first basic care that you have to see before getting a cat? So you have to do a lot of research. और तीसरा स्टेप ये होगा कि you have to take the consent of the person for whom you are getting, because some people have serious allergies to cat fur or cat the saliva. तो उसकी वजह से it can trigger their allergens and everything. तो it's always better to do the research beforehand. The second step would be to visit the cattery that you have looked. तो जैसे आपने रिसर्च किया एंड यू फाउंड आउट दैट कि आपके एरिया में एंड नियर बाय एरिया में देर आर लाइक 2 or 3 कैटरीज जो कि आपको किटन प्रोवाइड कर रहे हैं. इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप जाएं और पर्सनली वो कैटरी विजिट करें विद द पर्सन फॉर हुम यू आर बाइंग, और इफ़ यू आर बाइंग फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. कैटरी विजिट करने से आपको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, आपको डैम एंड सायर की हेल्थ पता चल जाएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किटन लेने से पहले किटन की फादर एंड मदर की हेल्थ कैसी है, यू नीड टू नो. सो जब तक आप अपनी डैम और सायर की हेल्थ और उनकी टेम्परामेंट और उनकी डिटेल ना देखें, तब तक आप किटन मत लें. सेकेंड स्टेप ये कि जब आप कैटरी में जाएं, ऑलवेज आस्क अराउंड, आस्क अबाउट the kitten's health, the cat's paper, documentation, age, everything. And without that, do not get the kitten. आपको वो breeder should responsibly provide all the documents, vaccinations, all the informations about the cat, all the informations about the dam and sire's temperament. ऑल्सो चेक दैट कि जहाँ पे वो किटन रह रहे हैं वो चीज़ केज फ्री होनी चाहिए एंड हाउस होल्ड स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, बिकॉज दैट ऑल्सो अफेक्ट्स एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम टू योर किटन्स टेम्परामेंट ऑल्सो. एंड द थर्ड विल बी टू इंटरैक्ट विद द किटन्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किटन के साथ इंटरैक्ट करें टू सी हाउ द किटन इज़ एक्चुअली बिहेविंग विथ यू, एंड विदाउट नोइंग दैट डू नॉट गेट द किटन. द लास्ट स्टेप वुड बी, कोई भी किटन अगर 3 months से नीचे है उसको मत लाइए.
The reason being is that a kitten का जो growth phase होता है 1 or 2 months, they actually spend a lot of time from the month 2 to month 3 in socializing with other kittens and other animals. This way kitten का temperament बहुत ही अच्छा develop करता है. Due to unsocialization or early weaning, kitten का negative temperament develop करता है, and the kitten can also face lot of immunity related problems and stomach related, organ related problems. So it is very important कि you provide enough time for your kitten to socialize in the cattery before weaning from the other litters. And obviously the breeder is going to tell you that कि kitten kitten 2 महीने की है, 2.5 महीने की है, and they will give you much younger kitten. The reason being they have to separate the kittens in order to get the mother pregnant. Ethical breeder will never do such a thing. Ethical breeders have their own rules and regulation of timings. कितने ईयर में वो ब्रीडिंग, एक साल में वो कितनी बार ब्रीडिंग करते हैं एंड कितने महीने में वो किटन्स को देते हैं. Never get a younger kitten. Always try कि किटन 3 months होने के बाद ही आप किटन को लेके आएँ एंड चेक कीजिए अगर 3 months का किटन है तो कहीं ना कहीं उसकी 2 वैक्सीनेशन हो रखी होगी. सो check the vet's records, check the health records, check the dam and sire, check the kitten's health, check the kitten for any external sign of illness, and also check the kitten's age properly with birth certificates. So without these things, do not get the kitten, because the problem is that you might end up getting a kitten which would be immunocompromised, and आप जितने पैसे खर्च करके वो kitten लेके आ रहे होंगे throughout the lifespan of the kitten, you would be spending way more than what you have bargained for. In foreign countries, people who go and buy kittens from breeder rather than adopting a streety, the main reason being that कि उनको एक healthy kitten चाहिए होता है, because सड़क पे भी उनको कहीं ना कहीं breed मिल जाता है, but what they want is more healthy and disease free of various genetic disease free kitten उनको चाहिए होता है, and that is where the breeders step in. एलिमिनेट सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू वो जो आपकी जेनेटिक डिजीज़ होती है उसको एलिमिनेट करते हैं फ्रॉम द जीन, एंड उन्हीं कैट्स को आगे ब्रीड करने का चांस दिया जाता है जिनकी हेल्थ अच्छी हो, कोई जेनेटिक डिजीज़ ना हो, एंड ओवरऑली दे आर मच मोर हेल्दियर देन अदर कैट्स. Otherwise the kitten is eliminated from the breeding program and is allowed to lead a happier and healthier life. Second thing is that after certain age, like some cats retire at 3 years of age, some cat retires at 4 years of age, some retire at 6 years of age. But after certain litter, they are allowed to be spayed and neutered and retire to a very comfortable and healthy life, rather than pushing them into breeding throughout the life, which happens in India the most. Second thing is that in India, breeding is not regulated, because of which the most unhealthy kittens you can get is through breeding, because they are not selectively bred. So the lot of kittens come with lot of genetic diseases. So we find the cats which are actually from the streets are much more immunity strength. They have a lot of strength of immunity, and they have much more fit compared to the ones you are going to get from the breeder. You might adopt a streety and आपको vet visits बहुत ही कम पड़ सकता है compared to a breed kitten जो आप breeder से लेके आ रहे होगे, and उसकी health and उसकी vet visit comparatively double, triple and 4 times भी हो सकता है. The major aim of this video is to encourage people to to adopt kittens rather than buying from shops. And if in case you want to buy, then this video should able to give you some idea about how to do the research properly, how to approach the breeders for information, how to get the information, and once you're satisfied, get the kitten. In only this way we can discourage illegal backyard breeding and exploitation of animal wombs in India. So adopt, don't shop, and if you're shopping, shop responsibly. So that's it for today, guys. Let me know in the comment section what do you think of this video, and obviously I always encourage discussions regarding any topic that I come up with, and please like the video, share and comment, subscribe to my channel, and I'll see you in the next video.